बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्चुअल कॉन्सेप्ट्स के बिहाफ पे मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। दिस इज़ आवर 16th लेक्चर, हमारा 16वां लेक्चर है फ्लूइड मैकेनिक्स की सीरीज़ का। एंड आई एम योर इंस्ट्रक्टर डॉक्टर फाद मुनीर अब्बासी। तकरीबन हाफ ऑफ द कोर्स हैज़ बीन कवर्ड अप टिल नाउ एंड इससे आगे जो कि कुछ चीज़ें रहती हैं हम उनको भी परस्यू करेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम। बट अगेन हर दूसरे तीसरे लेक्चर में मैं 2, 4, 5 मिनट निकाल के ज़रूर आपसे ये बात करने की कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट चीज़ों को साथ साथ समराइज़ करते जाएं। डोंट लीव इट टिल द एंड। इस बर्डन को इतना इकट्ठा मत करें कि आखिर में कर लेंगे या एट द एंड या एग्ज़ाम के करीब कर लेंगे या सेशनल्स या टर्मिनल्स के बाद कर लेंगे। ये इस तरीके से मत करें। ये छोटी छोटी चीज़ें अमूमन कोशिश ये होती है कि लेक्चर को इतना ज़्यादा लेंथी ना ही किया जाए कि स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लमेटिक हो, उनको इसको सॉल्व करने के लिए एक्सप्लिसिटली। सो ये जो छोटे छोटे चंक्स के अंदर डिवीजन की गई है मुख्तलिफ टॉपिक्स की, कोशिश करें कि इनको साथ साथ कवर करते रहें। ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। एक तो उसके 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो ये कि आपका साथ साथ कोर्स कवर होता जाएगा और जैसे जैसे हमारे 32 लेक्चर्स कंप्लीट होंगे वैसे ही आपका भी कोर्स और उसकी तैयारी जो है वो साथ साथ कंप्लीट होगी। पहली चीज़। दूसरी ये कि हर आने वाला लेक्चर आपके लिए आसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा when you will be in touch or you will be familiar of whatever we did in the previous lecture। हर लेक्चर के शुरू में इसीलिए आपको प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल कराया जाता है, ज़रा उसकी ब्रीफ लेआउट्स और हाइलाइट्स बताई जाती हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या कुछ किया, ताकि एक दफ़ा दोबारा से आपके जहन के अंदर वो चीज़ें रिकॉल हो जाएं। क्योंकि हर आने वाला लेक्चर जो है वो पिछले लेक्चर के ऊपर बेस कर रहा होता है और बिल्ड अप कर रहा होता है उस चीज़ को यूज़ करते हुए। सो कोशिश करें कि हर लेक्चर से पहले पिछले लेक्चर तक जितने भी चीज़ें हैं उन सबको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लिया करें ताकि आपको उस लेक्चर को समझने में आसानी हो। एंड एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ आप पढ़ाई करने और कोर्स पास करने के लिए ना करें ये, जबकि बल्कि उसके पैरेलल आप सीखने के तनाजुर में भी इन चीज़ों को लेके चल सकें। सो ये वो गुफ्तगू थी जो ट्रिवियली एक टीचर ने हमेशा करनी होती है और बच्चों ने सुननी होती है करनी। तो पता नहीं आप लोग इसको कहाँ तक कवर कर रहे हैं, करेंगे तो आप अपनी मर्जी से। बट माई एडवाइस इज़ कि आप इसको साथ साथ कवर करते रहें, बिकॉज ओनली दैट will be the way through which you can reap the benefits of this course in the best manner। सो ट्रिवियली जैसे हर लेक्चर के शुरू में मैं आपको लेआउट प्रोवाइड करता हूँ उस लेक्चर का कि उस लेक्चर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे और क्या कुछ लेके चलेंगे। सो आज के लेक्चर में भी here it is the layout of today's lecture। This is the 16th lecture and in this lecture I will start with the highlights of the previous lecture। पिछले लेक्चर में हमने क्या कुछ किया और क्या चीज़ें ऐसी थी जिनको लेके चले और किन चीज़ों के ऊपर फोकस रहा हमारा मेनली और प्राइमरीली, उसको डिस्कस करेंगे शुरू में। Then we'll go through the stream function and velocity potential for 2-dimensional irrotational incompressible flow and which will result in the Laplace equation। stream function and velocity potential को डिस्कस करेंगे फॉर 2-dimensional irrotational incompressible flow on and we'll see कि कैसे the stream function and velocity potential results in a Laplace equation। Laplace equation आप लोग familiar ज़रूर होंगे क्योंकि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं। So you should be familiar with the Laplace equation। इस Laplace equation को हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं एंड इसका सोल्यूशन तो ऑब्वियसली हमारा यहाँ पे फोकस नहीं है और ना वी आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट दैट। सो यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि किस तरीके से कि हम जब वेलोसिटी पोटेंशियल एंड स्ट्रीम फंक्शन को लेके चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं 2-dimensional irrotational incompressible flow के लिए, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट द Laplace equation which is a very famous equation in both the cases for the stream function as well as for the velocity potential। Then we'll discuss the relationship between the velocity potential and stream function। इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, इन दोनों की क्या तरतीब है, क्या चीज़ है जो इन दोनों को इंटरलिंक करती है, वेलोसिटी पोटेंशियल एंड स्ट्रीम फंक्शन। इन दोनों को किस तरीके से एनालाइज किया जा सकता है और दोनों को किस तरीके से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है।
ये भी चीज़ इसके साथ साथ देखेंगे. देन विल गो फॉर एन एग्जांपल जिसमें हम वेलोसिटी, पोटेंशियल एंड स्ट्रीम फंक्शन को कैलकुलेट करेंगे और एनालाइज भी करेंगे इन डिफरेंट मैनर्स. And at the end of this lecture, I'll summarize the proceeding of today's lecture in front of you to compile whatever we are going to do today. Now, previously we studied about the proof that the value of stream function is constant along a streamline. हमने prove किया कि the value of a stream function is constant along a streamline. हमने देखा stream function चूँकि is a two-dimensional function, so इसका differential, इसका derivative will be of the type used in the chain rule. फिर उसको कैलकुलेट करके हमने पर्टिकुलर स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन के लिए इसको कैलकुलेट किया. पर्टिकुलर जिस टाइम स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन इसके अंदर सब्स्टिट्यूट की गई तो वी सॉ दैट डी साई वाज इक्वल टू 0 एंड वी कंक्लूडेड दैट फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू or for a particular streamline the value of stream function is constant. उसके बाद लास्ट लेक्चर में मोस्टली कंप्यूटेशन से चीज़ें, कैलकुलेशन से चलती रही. हमने मुख्तलिफ चीज़ें कंप्यूट की, हमने कुछ एग्जांपल सॉल्व की. वी डिड से वर्ड प्रॉब्लम्स, वेलोसिटी फील्ड कुछ एग्जांपल्स के अंदर हमें प्रोवाइडेड थी और हमने स्ट्रीम फंक्शन को डिटरमिन किया. कुछ में स्ट्रीम फंक्शन प्रोवाइडेड था एंड वेलोसिटी फील्ड डिटरमिन की. Then we were asked, एक एग्जांपल के अंदर we were asked to analyze the nature of the flow. तो हमने मुख्तलिफ उसके कॉन्टेक्स्ट देखे और उनको जज किया. फॉर इंस्टेंस हमने फ्लो की रोटेशनल इरोटेशनल कैरेक्टरिस्टिक को भी जज किया मेकिंग यूज़ ऑफ द वेलोसिटी. तो वेलोसिटी को यूज़ करते हुए हमने उसका कर्ल फाइंड आउट करके वी वेंट फॉर द क्रॉस प्रोडक्ट चेक एंड जब कर्ल कैलकुलेट किया तो इट वाज नॉट इक्वल टू 0 एंड वी कंक्लूडेड दैट द फ्लो इज इरोटेशनल टाइप. लाइकवाइज हमसे स्ट्रीमलाइन कैलकुलेट की, स्ट्रीमलाइंस फाइंड की एंड वी फाउंड आउट दैट द स्ट्रीमलाइंस वर सर्कल इन वन ऑफ द एग्जांपल्स. माई मीन टू से कि ये तमाम चीज़ें जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर की और मुख्तलिफ चीज़ों को लेके चले तो सिंपली velocity field was just provided to us. Velocity field in the component or in the vector form was provided to us और उसको लेके उसको find out करके उसको लेके चल के हमने मुख्तलिफ analysis and nature of the flow discuss किया. हमने incompressibility check की, हमने flow का rotational irrotational behavior check किया, हमने streamlines find की, हमने velocity potentials find किए. तो velocity is a very important say quantity in the fluid mechanics. क्योंकि if you know the velocity then you can compute any other thing, any other quantity that you want, but you have to know, you have to have the knowledge of velocity in a particular precise manner. इसलिए ज़रूरी है कि वेलोसिटी को कंप्यूट करें. अभी तो चूँकि हम वेलोसिटी को लेके मुख्तलिफ चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे जैसे विल मूव ऑन, जब हम मोमेंटम इक्वेशन या नेवियर स्टोक्स इक्वेशन की तरफ जाएंगे तो विल सी कि हम वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एंड विल सी दैट. अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही ज़रूर हमने किया कि अगर हमें स्ट्रीम फंक्शन मालूम हो, स्ट्रीम फंक्शन नोन हो, तो हम उससे वेलोसिटी कॉम्प्लेक्स की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर की थी और हमने उनको सॉल्व किया था मेकिंग यूज़ ऑफ दिस टेक्निक्स. नाउ आज के लेक्चर में हम stream function and velocity potential for two-dimensional irrotational incompressible flows discuss करेंगे which will result in the Laplace equation. Now note that a velocity potential exists for an ideal and irrotational flow field only, whereas a stream function exists for both ideal and real fluids. देखें एक चीज़ मैंने आपसे इसके स्टार्ट में भी डिस्कस की थी और जब हम वेलोसिटी पोटेंशियल का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे तब भी मैंने आपसे डिस्कस की थी दैट velocity potential exists for an ideal
and irrotational flow field. दो चीज़ें, आइडियल एंड इरोटेशनल, और मैंने उस पॉइंट पे भी आपको ये बताया था कि व्हेन एवर द फ्लो विल बी आइडियल इट विल बी इरोटेशनल एंड वाइस वर्सा, जबकि whereas stream function exists for both ideal and real. Stream function, on the other hand, exists for both the ideal and real flow fields, which is one of the big difference between these two. दोनों में जो बड़े फर्क हैं उनमें से एक ये है कि that the velocity potential only exists for an ideal and irrotational flow field, whereas the stream function exists for both ideal and real fluids. Ideal fluid के केस के अंदर भी stream function exist कर सकता है and real flows के केस के अंदर भी stream function exist कर सकता है, but velocity potential will only exist for the ideal and irrotational flow field. Okay, now to start with, for a two-dimensional incompressible irrotational flow we have expressions for the velocity components U and V. हमने U और V को velocity components का नाम दे दिया in the x and y direction, which is trivial thing. In terms of both the stream function psi and the velocity potential phi. phi और psi की फॉर्म में u और v को कैसे लिखा जा सकता है, ये चीज़ ज़रूर देखने लायक है. यहाँ पे phi और psi की फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं x and y component of the velocity को. u, as you know that u is equal to partial psi by partial y and v is equal to minus partial psi by partial x. Name this as
इक्वेशन 1, हमने इन दोनों को मिला के इक्वेशन 1 का नाम दे दिया. नाउ इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी पोटेंशियल u और v को कैसे लिखा जा सकता है? u इज इक्वल टू माइनस पार्शियल phi बाय पार्शियल x एंड v इज इक्वल टू माइनस पार्शियल phi बाय पार्शियल y. इक्वेशन 2 का नाम दे दिया. अच्छा, फ्रॉम द इरोटेशनल कंडीशन, जब इरोटेशनलिटी की क्या कंडीशन है देखें, टेक अ लुक एट दिस. From the irrotationality condition, that is del cross v equal to 0. For a two-dimensional incompressible flow field, we have partial v by partial x minus partial u by partial y is equal to 0. इसको इक्वेशन 3 कह लें. देखें, हमने इरोटेशनलिटी की कंडीशन यानी कि डेरिवेटिव और द कर्ल ऑफ वेलोसिटी फील्ड फाइंड आउट किया फॉर द टू डायमेंशनल फ्लो फील्ड, एंड उसकी इक्वेशन ये आ गई विच इज नेम्ड एज इक्वेशन 3. नाउ इस इरोटेशनलिटी की कंडीशन के अंदर सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ u एंड v फ्रॉम इक्वेशन 1. जो स्ट्रीम फंक्शन की फॉर्म के अंदर वेलोसिटी के कंपोनेंट्स की वैल्यूज गिवन है u और v की, उनको सब्स्टिट्यूट कर दें इनटू द इक्वेशन 3. नाउ making use of equation 1 in 3, we get equation 1 को equation 3 के अंदर सब्स्टिट्यूट करें, we simply will get partial by partial x और v की जगह it will be minus partial psi by partial x and a minus sign partial by partial y and u की जगह पे this term which is partial psi by partial y is equal to 0, or you can simply say that partial square psi partial x square plus partial square psi by partial y square is equal to 0. Now और obviously एक माइनस साइन हमने सब्ट्रैक्ट करके उसको कैंसिल आउट कर दिया on the both sides. Now take a close look at this equation. Are you familiar with this equation? इस equation से क्या आप familiar हैं या you have solved it or you have seen it somewhere? इसको हमने equation 4 का नाम दे दिया. क्या आप इस equation से किसी न किसी जगह किसी न किसी स्टेज के ऊपर familiar हैं? और ज़रूर आप हैं. If you recall it, this is the well-known Laplace equation. ये Laplace equation है जो कि हम मैथमेटिक्स की जो कम्युनिटी है और मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट हैं उनका अक्सर इससे पाला पड़ता रहता है इन वन फॉर्म और दी अदर. सो देखें, एक चीज़ मैं आपको बताऊं बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट लेवल. हमने इरोटेशनैलिटी की कंडीशन ली, ठीक है. इरोटेशनैलिटी की कंडीशन विच वाज समथिंग रिलेटेड टू द वेलोसिटी पोटेंशियल थिंग, समझ रहे हैं? बिकॉज इरोटेशनल फ्लो होगा तो वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा. इससे पहले हम इरोटेशनैलिटी को लिंक करते रहे हैं वेलोसिटी पोटेंशियल के साथ. तो इरोटेशनैलिटी की कंडीशन के अंदर हमने स्ट्रीम फंक्शन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की u एंड v की फॉर्म में. u एंड v को इन टर्म्स ऑफ स्ट्रीम फंक्शन हमने रिप्लेस किया इसके अंदर, वी गॉट द लैप्लास इक्वेशन. ठीक, नाउ विल मूव द अदर वे अराउंड. हम अपनी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लेके चलेंगे एंड उसके अंदर वेलोसिटी पोटेंशियल की डेफिनेशंस u एंड v की सब्स्टिट्यूट करेंगे. सी कि तब हमारे पास क्या बनता है. Now for incompressible flow,
incompressible fluid, two-dimensional continuity equation is given as. अच्छा देखें, पहली चीज incompressible fluid, so the continuity equation will be like del dot v. एंड दूसरी चीज इट्स फॉर टू डायमेंशनल. सो अभी तक एटलीस्ट जितना दफा हमने इसको यूटिलाइज किया, यू शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट दिस, दैट हाउ टू राइट अ कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर व्हाट टाइप ऑफ फ्लोज. सो इट कम्स आउट टू बी पार्शियल u बाय पार्शियल x plus partial v by partial y equal to 0, and name this as equation 5. So this is the incompressibility condition or the continuity equation for an incompressible fluid in the two-dimensional flow field. Okay. Now substitute equation 2 में which in which u and v are provided in terms of phi, velocity potential की form में जो u and v provided, and substitute equation 2 in 5. So you will get partial by partial x, u की जगह partial phi by partial x minus partial phi by partial x plus partial by partial y, and यहाँ पे v की जगह from equation 2 we have minus partial phi by partial y. This comes out to be minus partial square phi by partial x square plus partial square phi by partial y square equals 0, and in simpler manner partial square phi by partial x square plus partial square phi by partial y square is equal to 0. Now take a close look at this, that यहाँ पर इस equation के अंदर again name this as equation 6. इसको इक्वेशन 6 का नाम दे दें. लेकिन देखें इंटरेस्टिंग चीज क्या है और यहाँ पे क्या हो रहा. दिस इज अगेन Laplace equation but in terms of phi or in terms of the velocity potential, whereas in the previous slide here it is equation 4 is also Laplace equation but in terms of stream function psi. So equation 4 and equation 6 are forms of Laplace equation, and this equation you should be familiar with this. My mean to say कि जब आप incompressibility की condition के अंदर velocity potential की definition substitute करेंगे, then you will get a Laplace equation in terms of the velocity potential, and when you will substitute the definitions of u and v in terms of stream function into the irrotationality condition, again you will get the Laplace equation there. So finally I write down equations 4 and 6 are the well-known Laplace
Laplace equation, and you are familiar with these. Now what is the relationship between the velocity potential and stream function? हमने ये तो देखा कि जब हम स्ट्रीम फंक्शन की कंडीशन या कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन या इनकम्प्रेसिबिलिटी कंडीशन के अंदर वेलोसिटी पोटेंशियल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तब भी हमें लैप्लास इक्वेशन मिलती है, एंड रिजल्ट इज द लैप्लास इक्वेशन. एंड जब हम इरोटेशनलिटी की कंडीशन के अंदर अपनी स्ट्रीम फंक्शन की डेफिनेशन को सब्स्टिट्यूट करें तब भी द आउटपुट इज द लैप्लास इक्वेशन. सो देयर मस्ट बी अ रिलेशनशिप बिटवीन द वेलोसिटी पोटेंशियल एंड स्ट्रीम फंक्शन. कुछ इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप ज़रूर होना चाहिए, जो और वो क्या होगा, which we will determine that here in this topic under this heading, that we want to find out the relationship between the velocity potential and stream function. Now let's start that. For an incompressible flow field, for an incompressible the equations of streamlines in 2D are given as dx by u dy by v, or in other words v dx minus u dy is equal to 0, or simply v dx minus u dy is equal to 0. Name this as equation 1. ये तकरीबन वही चीज़ है जो हमने start में when we proved that the stream function is constant for a particular streamline. So ये तकरीबन उसी grounds के ऊपर हम चल के इसको compare करेंगे with the velocity potential कि इन दोनों के दरमियान क्या relationship है. And let me give you a hint, we will compare their slopes. हम उनके डेरिवेटिव्स, उनके स्लोप्स कंपेयर करेंगे कि किस तरीके से ये चले. अगर यहाँ से आप इसको मज़ीद थोड़ा सा देखें तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस इक्वेशन देन dy by dx from this equation is simply equal to, now what is dy by dx from this equation? What can you can say about the dy by dx from this equation? It's simply v by u here. Isn't it? And we'll compare this. Let's call it star, equation star for the time being. And we'll see कि हम इसको किस तरीके से pursue कर सकते हैं. Now, using u is equal to partial psi by partial x and v is equal to partial psi by partial y with a negative sign in 1, we get v is equal to minus partial psi by partial y. Here it is, minus partial psi by partial y, and it becomes minus into minus plus dy plus partial psi by partial x dx equal to 0. This is the same process and same procedure which we did for
when we were proving that the stream function has a constant value for a streamline. और simply इसको equation 2 का नाम दे दें. Since psi the function of x and y, जो stream function है वो x and y का भी function है, so we can simply say that d of psi is equal to partial psi by partial x dx plus partial psi by partial y dy and equal to 0 by making use of equation 2. From equation 2. Again, this is equal to 0. Now, obviously, as we have seen previously as well, that d psi equal to 0 shows that the stream function is constant along a streamline. Lekin what its slope can give us, what is the slope of a particular streamline and how we are going to calculate it, and then we are going to relate it with the velocity potential. तो इसको हम कैसे pursue करेंगे ये देखते हैं. Take a look at this. From equation 2, here it is, from 2 the slope of a streamline of constant stream function psi is given as, now देखें, dy by dx, which is the slope of a streamline on which a psi or a stream function has a constant value, say at a constant psi which has any constant value, minus, अगर इक्वेशन 2 से आप कैलकुलेट करें, देखें इसके दो अगेन मेथडोलॉजीज और दो प्रोसीजर्स हैं. एक, आप इक्वेशन 2 से कंप्यूट करें मेकिंग यूज ऑफ dy by dx, and on the other side you have a ratio of partial psi by partial x with partial psi by partial y, or on the other hand you can make use of this equation star and simply substitute the value of v in terms of partial psi by partial x here and u in terms of partial psi by partial x. So आप इन वैल्यूज को इक्वेशन स्टार में सब्स्टिट्यूट करें या इक्वेशन 2 से कंप्यूट करें, in both the cases you will get the same result. So this is from equation 2, it results in partial psi by partial x over partial psi by partial y, and it is equal to, say, v by u. Name it as equation 5. Now along a line of constant stream function, constant velocity potential, d of phi is also is equal to 0, and we can write it as d phi is equal to partial phi by partial x dx plus partial phi by partial y dy, and is equal to 0 for a constant psi, and name it as equation 6. Now the slope of a
potential line with constant phi is given from equation 6. Equation 6 से अगर आप slope of this line which has a constant phi for which d phi is equal to 0, अगर आप इसको calculate करें तो you will find out that dy by dx is equal to, at a constant phi, is equal to minus partial phi by partial x over partial phi by partial y, and in terms of velocity potential this is equal to minus u over v, and name this as equation 7. Now compare equation 5 and 7. Equation 7 basically gives us the slope of a line. इस line का slope हमें equation 7 provide कर रही है, which has a constant psi, which has a constant phi, यानी equipotential line, वो line जहाँ पे potential function is equal to constant और इसकी same value, equal value throughout the line. So this equation 7 provides us the slope of such a line, whereas equation 5 provides us the slope of a line for which stream function has a constant value, and this is equal to minus v by u. So from 5 and 7, equation 5 और 7 को अगर हम compare करें और analyze करें दोनों को, then dy by dx or slope of a line with constant stream function into dy by dx slope of a line with constant phi, so this is equal to v by u into, for constant phi this is minus u by v, and this is equal to minus 1. Or you can say that dy by dx for a constant psi to dy by dx, instead I had to write dy by dx for a constant stream function into dy by dx or the slope of the line for a constant phi is equal to minus 1. Name it as equation 8. Now this is interesting here. दो lines हैं, for one line stream function has a constant value, or it is the line with the constant value of stream function, and for the other line velocity potential has a constant value, or this is the line for which the velocity potential is constant. इन दोनों लाइंस के अगर स्लोप कैलकुलेट करके उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट किया जाता है, इट कम्स आउट टू बी -1, व्हिच इज इंटरेस्टिंग. नाउ फ्रॉम द नॉलेज ऑफ योर ज्योमेट्री, व्हाट वुड यू से कि अगर दो लाइंस का स्लोप का प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू लाइंस? Yep, obviously this shows if the product of the slope is equal to -1 of two lines, then both of these lines are perpendicular to each other. So equation 8 here shows that the product of two general slopes, हमने कोई भी पर्टिकुलर कंडीशन इसके ऊपर इम्पोज नहीं की, so these are general slopes.
of streamlines and potential lines is equal to negative unity. Then the two sets of lines are therefore perpendicular. So चूँकि इन दोनों लाइंस के स्लोप्स जो हैं उनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1, सो these two set of lines are therefore perpendicular to each other. We can simply say that streamlines are perpendicular to the potential lines and potential lines are perpendicular to the streamlines. लेकिन streamline को in context to the velocity भी देखना जरूरी है. आप जरा velocity और streamline का relationship भी ध्यान में रखें तो you will ultimately will be able to figure out from here and we infer that for a two-dimensional steady state ideal, चले two-dimensional तो हो गया because stream function only exists for a two-dimensional flow. Steady state इसलिए because incompressibility condition या continuity equation of the steady state fluid is satisfied. तो ideal किस लिए? Ideal इस वजह से because the velocity potential will only exist for the ideal flows. जो real flows हैं उनके लिए velocity potential exist नहीं होगा. So ये सारी conditions इस तरीके से move कर रही हैं. You see ideal irrotational. Why rotational? Because the velocity potential does not exist for the rotational flow field a velocity potential exists and potential lines are perpendicular. Potential lines are perpendicular to streamlines or potential lines are perpendicular through this relationship. अगर आप इसको closely देखें इन दोनों को कि इन दोनों का स्लोप का जो प्रोडक्ट है दिस इज इक्वल टू -1. नाउ एक और चीज देखें, जहां पे स्ट्रीम फंक्शन स्ट्रीम लाइंस एंड वेलोसिटी फील्ड का ताल्लुक है तो
velocity is always tangent to the streamlines by definition. Streamlines के velocity हमेशा tangent है by the definition of the streamlines, and potential lines are perpendicular to streamlines. और अगर इसको मज़ीद सिंप्लिसिटी में आप अगर इसको ड्रॉ करना चाहें तो ये भी एक अच्छी और एक मज़े की असाइनमेंट ज़रूर होगी आप लोगों के लिए कि अगर आप इस तरीके से ड्रॉ करें कि ड्रॉ सम स्ट्रीमलाइंस से in the horizontal direction or tilt them a bit, then draw the potential lines perpendicular to them or in the transverse direction, then draw the velocity on top of it. तो फिर देखें कि इन तीनों के रिलेशनशिप से आपके ज़हन में क्या क्या फिगर बनती है. सो हम चले थे where we had to prove the relationship between the velocity potential and a stream function, और हम उसको लेके चले and we proved it that the product of slope of the two lines is equal to -1, and which shows that these two equations are perpendicular to each other, and further the velocity field is always tangent to streamlines and potential lines are perpendicular to the streamlines. So this is the relationship between these two, and again I would say that I would suggest you कि आप इसको एक दफ़ा ड्रॉ करके ज़रूर देखें कि किस तरीके से इनका क्या रिलेशनशिप बनता है. On a simple page draw the streamlines, then draw the potential lines, and then the velocity which is tangent to the streamline. So I leave it up to you how you do it. Now let's go for an example. एक example solve करते हैं making use of what we have learned so far. Consider the flow field given by psi is equal to ax square minus ay square, where a is equal to 1. Show that the flow is irrotational. Okay. Then in B part, determine the velocity potential for this flow. ठीक है, we have to determine the velocity potential as well. Then the lines of constant psi and phi we have to find out. Okay, it should be, say, lines, not limes. So let's start. G. It is provided that stream function psi is equal to ax square minus ay square, where a is equal to 1. Okay, come on. Now, where a is equal to 1, so we can simply write that psi is equal to x square minus y square. Name this as equation 1. Now, u is equal to partial psi. By definition, u is equal to partial psi by partial y. This is equal to minus 2y. Equation 2. V is equal to partial psi by partial x with a negative sign, and this is equal to minus 2x. Name this as equation 3. Now, सबसे पहले we have to show that the flow is irrotational. So हम velocity potential में भी interested हैं. Now let's move for a irrotational flow field for A part. For fluid flow to be irrotational, fluid flow to be irrotational, we simply have to prove that del cross V is equal to 0. So del cross V here is equal to partial V by partial x minus partial U by partial y, and del cross V, after using the definition of say the cross products definition,
we simply can say that partial v by partial x is equal to minus 2x, and partial u by partial y is equal to again minus 2. So it's in a more simple manner equal to 0, which shows that flow is irrotational. देखें हम शुरू किधर से किया, हमें स्ट्रीम फंक्शन की वैल्यू गिवन थी एंड वी वर आस्क्ड टू शो दैट द फ्लो इज irrotational. सबसे पहले because we were given the value of stream function but we were unaware of the values of the velocity components, so हमने stream function को use करते हुए using definition of the stream function we calculated the x and y components of the velocity, which came out to be minus 2y and v came out to be minus 2x. Now velocity potential की exist करने के लिए ज़रूरी है that the flow should be irrotational, and also we had to show that the flow is irrotational. So del cross v should be equal to 0. Del cross v, which we computed partial v by partial x minus partial u by partial y. So partial v by partial x is equal to minus 2 minus partial u by partial y, which came to be minus 2. So minus 2 plus 2 is equal to 0. So flow here is irrotational. Hence phi, or the velocity potential, exists here. Thus let's go to the B part, which is determine the velocity potential for this flow. Now velocity potential for this flow, we can simply say that u, by the definition of the velocity potential, u is equal to minus partial phi by partial x, and v is equal to minus partial phi by partial y. Now u here is minus 2y and v is equal to minus 2x, so minus 2y and v is equal to minus 2x. Integrating both sides results in firstly cancel out the negative sign from the both sides, and this comes out to be, and after integrating, phi is equal to 2xy and plus function of y, and from v, phi is equal to 2xy plus a function of x. Say if you want to differentiate this both of them, you can simply compute them. Now ye phi and ye phi, both of them are representing the same function. They are representing the same function, same velocity potential. So by computing them, we calculate that, or we figure it out that f is equal to constant, because here it is f of y and here it is f of x, so it can only be possible if f is constant. So f is equal to a constant, and for the sake of simplicity we can take it equal to 0. Therefore phi is equal to 2xy plus c, which is any given constant, and the simplest form of phi will be 2xy plus 0, which is the most simple form for this constant velocity potential. Now for constant stream function, d psi is equal to 0, or partial psi by partial x dx, which is 2x
dx minus 2y dy is equal to 0. Simply, I'm doing nothing. I just simply rotate partial psi by partial x dx plus partial psi by partial y dy. ये इस फॉर्म को कन्वर्ट करके सिंपली हमने इसको इस तरीके से लिखा. सो dy by dx for a constant psi is equal to x or y. This is the slope of a line with constant psi. Now, for a constant velocity potential, d phi is equal to 0 or 2ay dx plus okay. D phi is equal to 0 for a constant phi line, or 2y dx plus 2x dy is equal to 0. Making use of the definition, or we have simply used the fact that partial phi by partial x dx plus partial phi by partial y dy is equal to 0, which is equal to d phi, obviously, for that case. Now, compute dy by dx for constant phi from this equation, and it comes out to be minus y over x. Simply 1, 2 and 3, name it as equation 4, and this as 5, and name this equation as equation 6. From 5 and 6, dy by dx for a constant psi into dy by dx for a constant phi is equal to minus 1. Again, the slope of the product of the slope of two lines is equal to minus 1. So these lines are perpendicular to each other, or so the lines of constant phi and psi are perpendicular to each other. Well, this property of potential lines and streamlines is useful in graphical analysis of the fluid flow. Again, I'm saying this property of streamlines and potential lines is very helpful in the graphical analysis of the fluid flow. That's why I told you to draw at least these lines. अगर आप इसकी कोशिश करेंगे, and you will simply get that if you draw the lines, if you name these as the streamlines, say A, B, C and D, if these are the streamlines, तो हर streamline के ऊपर, हर streamline पे stream function की value constant होगी. Say for the line A it has a constant value psi 1, for a line B it has a constant value psi 2, similarly for 3 and similarly psi 4. Now the potential lines will be perpendicular to these only if I am able to draw them correctly. Yeah, these are the potential lines, say E,
F, G and H. तो अगर ये पोटेंशियल लाइंस हैं तो इस हर पोटेंशियल लाइन के ऊपर वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट. से phi 1 इस पे कांस्टेंट वैल्यू ऑफ phi 2, इस पे कांस्टेंट वैल्यू ऑफ phi 3 और H पे कांस्टेंट वैल्यू ऑफ phi 4 कैलकुलेट की. नाउ this is one way of looking at it. Now what is the relation between the streamlines and the velocity potential and the stream function? So stream velocity profile, velocity is always tangent to the streamlines. So this is streamlines. If this is the streamline, then इसके किसी पॉइंट के ऊपर आप tangent draw करें. If this is the tangent, then this is the velocity field. Similarly, इस पॉइंट के ऊपर अगर आप tangent draw करें तो this is the velocity field. और likewise अगर इस पॉइंट के ऊपर आप tangent draw करें तो this is the velocity field. So these are the streamlines. These are the potential lines, and tangent to the streamlines at every point is the velocity field. Take for instance, अगर यहाँ पे भी कोई tangent आप draw करें तो it will show you direction of the velocity. So that's why I am very keen. आप इसको ज़रा neatly draw करके you can analyze what is the orientation of the flow. This is very helpful in the analysis, in the graphical analysis of the fluid flow. With this, I take you to the summary of today's lecture. We studied about the stream function and velocity potential for two-dimensional irrotational incompressible flow, and we saw that how both of the cases resulted in the Laplace equation. And then we studied about the relationship between the velocity potential and the stream function, and we saw that the product of the slopes of the lines with constant stream function and the constant velocity potential was equal to -1. And at the end of today's lecture, we solved an example to calculate the, say, velocity potential, and to show that the lines of constant phi and psi are perpendicular to each other. So with this, let's move towards today's quote, and it reads that always take care of your parents, they won't stay with you forever. एक चीज़ decided है कि जो भी इंसान इस दुनिया में आया है उसने इस दुनिया को छोड़ के जाना ही है. सो पहले या देर, जल्द या बदेर, पहले या बाद में ये हो सकता है ज़रूर, लेकिन एक चीज़ डन डिसाइडेड है कि कोई भी चीज़ कांस्टेंट कंसिस्टेंट नहीं रहने वाली, कभी भी नहीं रहने वाली. इसलिए चीज़ों की कदर करें, और जो चीज़ें सबसे ज़्यादा कीमती हैं उनकी सबसे ज़्यादा कदर करें. और आई एम टॉकिंग अबाउट योर पेरेंट्स, क्योंकि ये वो नेमत है जो मालिक ने बहुत खुशनसीब लोगों को दी है. ये करीब तरीन राब्ता है आपका आपके रब के साथ. तो कोशिश ये करें कि उनकी इस तरीके से कदर करें, उनके होते हुए उनकी कदर करें. मैं अक्सर देखता हूँ पीपल आर वेरी मच एंशियस एंड एंथुसियास्टिक अबाउट देयर पेरेंट्स व्हेनेवर दे आर गॉन. उनके मरने के बाद उनके बारे में बड़ा पछतावा लेके बैठे होते हैं, जी हमसे ये गलती होगी, ये हो गया, ये हो गया. नहीं, आज जब वो जिंदा है, आज वो हयात हैं, आपके सामने है, यू कैन सी देम, यू कैन टॉक टू देम, यू कैन फील देम, यू कैन टच देम. सो आज उनकी कदर कर लें, और मरने के बाद उनकी कदर की तो क्या फ़ायदा. कोशिश करें कि जितनी उन्होंने आपके लिए कोशिश की है, जितना उन्होंने आपके लिए एफर्ट किया, आपकी वालदा ने, आपके वालिद ने, दोनों ने जिस बेबहा मेहनत से आपको परवरिश किया उन्होंने और आपको पाला पोसा, उनका वो सिला तो आप कभी भी नहीं दे सकते. कोशिश ये ज़रूर करें कि उनको इतनी खुशी ज़रूर दें कि उनको ये एहसास हमेशा रहे कि यू पीपल लव देम. कि आज कदर कर लें, क्योंकि हमेशा वो आपके साथ नहीं रहने वाले. एंड व्हेन दे वोंट बी विद यू, यू विल मिस देम अ ग्रेट डील. मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स से एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ कि कम से कम अपने पेरेंट्स की कदर करें, अपने पेरेंट्स की कदर करें, और आज कदर करें. रियलाइज इट दैट इट इज़ अ बिग वेल्थ which you are having at your home if your parents are there. अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को बहुत सी आसानियाँ और कामयाबियाँ दे. Till our next lecture, it's Allah Hafiz from my side.